Good morning, students. Today we are going to start new chapter of geography. That is lifelines of national economy. Today we'll cover the topic 1 regarding the introduction of the chapter. We use different material and services in our daily life, like food items, AC, refrigerators, sugar, vegetables, fruits. There's a very long list. So many materials which are used by us in our daily life. The materials and services which are used by us, some of these are available in our surrounding. कुछ चीज़ हमें आसपास हमें मिल जाती है. But while other are we have to bringing them from far off places, from the other places. So we have to go to bring them on those places, because goods and services do not move from supply locales to demand locales on their own. कोई भी गुड या सर्विसेज अपने आप सप्लाई लोकेशन से जहां जरूरत है उस गुड्स की और सर्विसेज की, उस डिमांड लोकेशन तक अपने आप नहीं पहुंचेगी. For the movement of goods and services from supply location to demand location, we need transport. Without transport, movement of goods and services not possible. Some peoples are engaged in the facilitating these movements. There are some peoples who are engaged in facilitating these movements, जो सप्लाई लोकेशन से डिमांड लोकेशन तक गुड्स और सर्विसेज को पहुंचाते हैं. Such peoples are known as traders, because they cannot move their own. Such peoples are known as traders, and they make the product come to the consumer by transportation. कंज्यूमर तक को ट्रांसपोर्ट हेल्थ से पहुंचाने के लिए की रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रेडर्स फुलफिल करते हैं. द पेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. इन ए कंट्री country will develop or not is depend on the production of goods and service in that country. But production के साथ साथ movement of these goods and services also important. जिस कंट्री में गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस होती है कि वो मूवमेंट नहीं कर पा रही है ओवर स्पेसेस, then there is no chance of development of their country. So if we want to develop the country rapidly, so with the production of goods and services, we need their movement also over spaces. Therefore, we can say the efficient means of transport are prerequisite for the fast development. किसी भी देश की डेवलपमेंट के लिए सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है, फर्स्ट नेसेसरी कंडीशन है, दैट इज द एफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. Their means of transport are classified into three categories. Mainly, there are three domains of the earth: land, water, and air. On the basis of these domains, we classify them into three categories: land transport, water transport, and air transport. Further, land transport classified in three categories: roadways, railways, and pipelines. Water into inland waterways or overseas waterways. Airways, domestic airline service, international airline service. डोमेस्टिक ये प्राइवेट एयरलाइन सर्विस हो सकती है, पब्लिक भी हो सकती है. सो दिया था मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. बट फॉर ए लॉन्ग ट्रेड we can say that
For a long time, the trade and transport were restricted to a limited space. हम ज्यादा दूर के एरियाज तक ट्रेड और ट्रांसपोर्ट पॉसिबल नहीं था. बट विद द डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जब से नई साइंस में डेवलपमेंट हुई है, नई टेक्नोलॉजी आई है हमारे पास, नए नए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हमारे यहाँ इन्वेंटेड हुए हैं, तब से एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट एक्सपेंडेड फार एंड वाइड. तब से दूर दूर के एरियाज में हम बहुत फार और वाइड एरियाज के अंदर अब ट्रेड भी कर सकते हैं और ट्रांसपोर्ट में पहुंच आसानी से वहां तक हम जा सकते हैं. सो ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट ऑल्सो हैज इन expanded far and wide because of the development in the science and technology. Today, the world has been converted into a large village. आज पूरा विलेज एक in the time of globalization, पूरा वर्ल्ड एक बड़े विलेज की तरह हो गया है. हम किसी वर्ल्ड के किसी भी एरिया में, किसी भी कंट्री के अंदर आसानी से आ जा सकते हैं. एक कंट्री का बना हुआ गुड्स दूसरी कंट्री में आसानी से हम सप्लाई कर सकते हैं. It is possible just because of the efficient means of transport. And transport has been able to achieve this with the help of equally developed communication system. So we can say that transport is helped by communication. Transport को help करता है developed means of communications. Therefore, transport, communication and trade are complementary to each other. For trade we need transport, and to develop transport we need the communication. So they all are complementary to each other. Today, India is well linked with the rest of the world, despite its vast size, diversity, linguistic and socio-cultural plurality. आज इंडिया में so many diversities है. इंडिया कंट्री के अंदर बहुत बड़ा साइज है इंडिया कंट्री का. कहीं डेजर्ट एरिया है, कहीं प्लेन एरिया है, कहीं आइलैंड्स हैं, प्लेटू एरियाज हैं. डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट रीजन्स फॉलो होते हैं. इंडिया इज ए मल्टी कल्चरल कंट्री. डिस्पाइट ऑफ ऑल दीज डाइवर्सिटीज, इंडिया इज लिंक्ड विद ऑल अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड. मेनली रेलवेज, वाटरवेज, एयरवेज, न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन, it is television, and cinema, all etc. All these things have been contributing to its socio-economic progress in many ways. The traders from local to international level have been added to the vitality of its economy. Because of all these things, our life has become more comfort. So mainly in this chapter we will try to understand that how the trade, how the transport and how the communication served as the lifeline to economy of our country. It is thus evident that a dense and the efficient network of transport and communications is prerequisite for local, national and global trade for today. So in this chapter mainly we will focus how they served, how they act as lifelines for to the economy of national economy of our country. That's all for today, students.